Hi guys, it's Khushi and in today's video I'm going to do a 3D sea turtle painting from Nemo. So yes, I'm going to paint the baby sea turtle from Nemo, and for that I'm going to use the Fevicryl's Mouldit clay, and this is basically a molded epoxy compound which is used for murals, decor and 3D art. You can easily find this molded clay compound in a stationery shop, and this is for 25 rupees. So inside the packet you'll basically get one hardener and one resin base. So the instructions mentioned on the back side of the packet basically say that you have to mix equal quantities of the molded resin and the molded hardener until it turns white, and then it is ready to use. So the next thing that you will be needing is basically a piece of cardboard. So this is the cardboard that I am going to use. तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे एक रफ स्केच, और कुछ इस तरह से मैंने रफ स्केच ड्रॉ किया है। इसके बाद हम लोग मिक्स करेंगे क्ले। तो क्ले मिक्स करने के लिए मैंने ग्लव्स पहने हैं क्योंकि ये क्ले बहुत स्टिकी है। सो आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू डू द सेम। सो फर्स्टली मैंने ओपन किया रेजिन बेस। तो रेजिन बेस बहुत ज़्यादा स्टिकी था और बहुत टाइम लगा पैकेट से निकालने के लिए। और उसके बाद मैंने ओपन किया हार्डनर। हार्डनर भी स्टिकी था पर वो इजीली निकल गया पैकेट से। इसके बाद हम लोग को बेसिकली दोनों क्ले को मिक्स करना है इक्वल क्वांटिटीज़ में। सो यार जो हम 3D हार्ट बना रहे हैं वो बहुत बड़ा होने वाला है, इस वजह से 2 पैकेट लगेंगे ही मोल्डेड क्ले के। तो सबसे पहले मैं पूरा ही यूज़ कर रही हूँ और पूरा पैकेट को मिक्स करूँगी। तो पैकेट पे उन लोग ने मेंशन किया है कि रोलिंग प्रोसेस रिपीट करना है अंटिल इट यूनिफॉर्मली मिक्सेस एंड बिकम्स कम्प्लीटली वाइट। सो इस क्ले को तब तक मिक्स करना है जब तक ये वाइट नहीं हो जाता, और उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे। सो हियर कम्स वन इम्पॉर्टेंट स्टेप। तो बेसिकली यहाँ पे मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ सम पाउडर ऑन द ग्लव्स एज वेल एज ऑन द सर्फेस। सो द रीजन वाई वी आर डूइंग दिस इज बिकॉज द क्ले इज वेरी स्टिकी एंड वी वुड नॉट वांट इट टू स्टिक टू आवर ग्लव्स एज वेल एज ऑन द सर्फेस, and it also gets a little easier to mix the clay, and it will take about 3 to 4 minutes to mix the clay completely, and this is how it will turn out to be. तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे एक स्मॉल पोर्शन ऑफ क्ले को लेके। कुछ इस तरह से मैंने उसको रोल किया है बिटवीन पाम्स, एंड आफ्टर डूइंग सो इट इज़ टाइम टू बेसिकली स्टिक द क्ले टू द कार्डबोर्ड यूजिंग सम फेविकॉल। और हम लोग सेम प्रोसेस को यूज़ करके पूरे टर्टल को कवर कर देंगे क्ले से। और अगर आपको क्ले को स्मूथ करना हो तो आप थोड़ा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। Once you are done sticking all the clay, it is time to basically keep it aside and let it dry. And this is what it looks like after it's completely dried up and it is solid as rock. Now you are basically going to draw some details on it. And for the painting process, I am going to use 2 acrylic colors. These are the studio acrylic colors and the other one are from Fevicryl. And to start with, I am basically going to do the background first, because the background is also a major part of the painting. So here I am starting off with a light blue paint, and after that I am basically going to add the further details using a darker shade.
here I'm basically using a darker shade and blending it out with the help of a dry brush. This is what it looks like, and the major part of a painting is done, and it is now time to focus on the main element, that is our sea turtle. And this is what the 3D sea turtle painting looks like. I hope you guys enjoyed watching this video, and if you did, then give it a thumbs up and also subscribe to my channel. And if you want to watch more such videos, then do let me know in the comment section, and I will see you guys in the next video. Bye.